Hi everyone, I'm Sakshi and I welcome you to the B.Ed notes presented by Train the Teacher. Today we'll get started with Unit 1 of Paper 3, in which we are going to talk about what is teaching, the viewpoints, the nature and the characteristics, and so many other things, the relationship, phases, right, and the difference, etc. Okay, let's get started with the first thing, which is what actually teaching is. So, there are going to be four elements through which we are going to understand what teaching is. The first one here is teaching means face to face interaction, of course, between two or more people, one of whom is a teacher, okay, who aims to impart knowledge, information, skills, values, attitude, etc. The other one is a learner, okay, who aims to learn and acquire all the things that are being taught to him or her. Okay, uh, everybody, it's again an important part of what we are learning right now, as these questions are usually in the exams for 4 marks. Okay, now here, let's say, even if something as basic as what is teaching, if this comes in your exam, you should be able to answer it. Okay, so इसीलिए I have also mentioned the names of two critiques, theorists, okay, who've played major role in the field of teaching. One of them is John B. Hugh, and the second one is James K. Duncan. All right, now we are also defining teaching as per their perspective. So as per John B. Hugh and James K. Duncan, teaching is an activity with 4 phases. The first one is a curriculum planning phase, second one is instructing phase, and third one is measuring phase, and the last one is an evaluative phase. So if this question comes for 4 marks, this if you're going to write all of it, I'm sure you're going to you'll be able to expand it, and you'll be able to write something in the answer or to the answer. Okay, so what is teaching? This is the meaning of teaching. Now to understand what is teaching, we'll look at teaching from 3 different perspectives: authoritative, democratic, and laissez-faire. Now again, this phrase is commonly mispronounced phrase. People usually end up pronouncing it as laissez-faire, but it is not laissez-faire, it is laissez-faire. Okay, let's quickly understand the difference between these 3 with some really quick differences. So in authoritative, teacher is dominant; in democratic, teacher is guide-like; and in laissez-faire, the teacher is friend-like. Okay, in authoritative, teacher's role is teacher's role is full of control over class. Teacher sets rules and expectations to be followed, whereas in democratic, teacher is a facilitator. Teacher facilitates discussion, teacher facilitates all the activities in the classroom, as he or she is guide-like. In laissez-faire, teacher provides minimal guidance and intervention. देखो, laissez-faire is our ideal classroom, जिसकी boundaries fixed नहीं है, unstructured है, student led classroom है, right? स्टूडेंट्स खुद ही प्रॉब्लम लाते हैं, खुद ही समझते हैं. टीचर प्रोवाइड्स गाइडेंस. वो तब गाइडेंस प्रोवाइड करता है जब उसको लगता है कि गाड़ी पटरी से नीचे जा रही है, और व्हेन द टीचर थिंक्स कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिनिमल इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ. सो दैट इज़ laissez-faire. डेमोक्रेटिक अगेन इज़ वन ऑफ आवर आइडियल क्लासरूम्स, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन 50-50 होती है. टीचर पढ़ाती है, स्टूडेंट सीखता है, क्वेश्चन करता है, प्रैक्टिस करता है. एंड इन अथॉरिटेटिव, it's if we see the ratio, it's like 90 or 100:0. So 100% teacher के पास होती है lead, as our next point is also this. Decision making is with teacher, okay, here by both teacher and student, and here by students. Communication one way है, teacher पढ़ा रहा है, बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है. barely 2 way होगी अगर होगी तो. फैसिलिटेशन डेमोक्रेटिक क्लासरूम में 2 वे है. टीचर क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पुट करती है, एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एक्टिवली. इन laissez-faire, it is limited and students rely more on self-direction because these are independent classrooms. Level of teaching.
क्या लेवल हिट करता है अथॉरिटेटिव क्लासरूम? मेमोरी लेवल, ये वाला अंडरस्टैंडिंग लेवल और ये वाला रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, इट्स मेजरली ये आपको सोचने पे मजबूर करता है, ये वाला लेवल जो है। रिफ्लेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, सक्सीड होते हैं, फेल होते हैं, बट इट्स मोर ऑफ रिफ्लेक्टिव एंड दिस इज अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। इन द नेक्स्ट वन हमने टीचर का रोल बता दिया है, टीचर्स रोल। नाउ स्टूडेंट का रोल है to follow the rules and the expectations, to listen to the teacher. Okay, in this one students will participate actively, and in this one students take responsibility of their own learning. Classroom structure का मतलब है कि it's related to autonomy also. Classroom structure rigid है. Okay, टीचर अगर प्लान करके आया है उसको इस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ाना है, वो इंश्योर करेगा कि वो आपको सब पढ़ाए, एंड ही और शी विल इंश्योर दैट everything is followed as per the plan, and there is no other thing, no such creative element or nothing extra or anything like that happens, whereas here it's flexible का मतलब है कि टीचर के प्लानर में ये होगा कि आई हैव टू आस्क स्टूडेंट्स व्हाट सेफ्टी इज़। नाउ अगर स्टूडेंट ने ये जवाब दिया तो आई विल मूव फॉरवर्ड टू दिस एक्टिविटी, अदरवाइज आई विल डू दैट एक्टिविटी। तो फ्लेक्सिबल है। द डिस्कशन इन दीज क्लासरूम्स डिपेंड ऑन व्हाट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड। इन दिस वन इट इज़ लूज और अनडिफाइंड बिकॉज स्टूडेंट्स ही हैं करता धरता इन क्लासेस के। टीचर्स के पास एक बेसिक ऑब्जेक्टिव वाली गाइडलाइंस होती है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे बच्चों को ये सोचने पे मजबूर करना है, ये रिफ्लेक्ट कराना है। सो इट्स स्टूडेंट्स लेड क्लासरूम, स्टूडेंट्स डिफाइंड क्लासरूम। ओके, ऑटोनॉमी का मतलब है कि इंडिपेंडेंस, छूट कितनी है हमारे स्टूडेंट्स के पास। यहाँ पे लिमिटेड है ऑफ कोर्स, क्योंकि रिजिड क्लासरूम्स हैं, टीचर के पास है सारी मोनोपोली अथॉरिटी। यहाँ पे मॉडरेट है एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हाई है। क्रिएटिव एलिमेंट, क्रिएटिविटी, इट emphasizes on following procedures. This one emphasizes, democratic emphasizes on creative learning, and this one emphasizes on independent learning. At the end we have development. So in authoritative classrooms, nothing much, students do not develop anything much. It's only habit formation, discipline, is something that they learn. Here they develop thoughts and ideas, creative elements as well, and here they end up developing personality as a whole, problem solving skills, critical thinking skills, and many more. Okay, so I hope it's clear, everyone. So we've understood teaching by looking at its meaning, general meaning, viewpoints from authoritative viewpoint, democratic viewpoint, and laissez-faire viewpoint. Now we'll look into teaching from nature and characteristics. Let's understand. ये बहुत important है, बहुत ही basic terms हैं, but हम confuse हो जाते हैं, बहुत बारी समझ ही नहीं पाते हैं. So nature of teaching का मतलब है the principles, values, कॉन्सेप्ट्स, बिलीव सिस्टम, प्रोसेस जो गाइड करता है टीचिंग प्रोसेस और हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, वो है उसका नेचर, है ना. हम बोलते भी हैं इंसान का नेचर कैसे है ना. उसका बिलीव सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, जो पिलर्स हैं वो उसका मतलब होता है नेचर ऑफ टीचिंग. फॉर एन एग्जांपल, स्ट्रक्चर, कि टीचिंग नॉलेज इम्पार्ट करेगी. टीचिंग को लर्निंग और डेवलपमेंट फैसिलिटेट करनी है. इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, इट डज हैव इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड टीचर्स. इट रिलाइज ऑन स्ट्रैटेजी, करिकुलम, कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. सो वो जो एक मेन प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, वो होता है नेचर ऑफ टीचिंग. इफ़ यू लुक एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, बहुत ही अच्छी डिफ्रेंसिएशन हुई है यहाँ पे. इट मीन्स द एक्शंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर दैट मेक्स टीचिंग हाईली इफेक्टिव. सो हियर इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, एंड हियर इट इज़ अबाउट qualities that make teaching highly effective. For an example, lesson preparation, time management, lesson execution, students engagement, and so many other things, administrative work, questioning skills. Okay, so again these were certain elements of teaching. So we've looked into meaning,
viewpoints, nature and characteristics. The last one is relationship with learning. Here we had defined कि teaching का क्या मतलब होता है, but learning का क्या मतलब होता है. Let's look into it. 2. So learning is a process of acquiring. Okay, teaching was a face-to-face interaction. Okay, between teaching is a process of imparting knowledge. Now here learning is a process of acquiring knowledge, information, values, skills, attitude, etc. through teaching के ज़रिए वो लर्न कर सकते हैं हम. सेल्फ स्टडी, ओके, हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या सेल्फ एनालिसिस. नाउ दीज 4 words are actually important. It's not only when somebody is going to teach us only then we are going to learn. No, we can of course learn through our experiences, खुद पढ़ के, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एनालिसिस के ज़रिए. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग नहीं है तो लर्निंग नहीं है बहुत हद तक. सो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग. Teaching and learning depend on each other. There is a reciprocal relationship as well. Both learn from each other. Okay. Teaching methods and student engagement influence each other. The better the teaching, the better the learning. And through reciprocal relationship, there is a personal growth for both. And learning goals drive teaching goals. Okay, so this was the relationship between teaching and learning. And this was the meaning of teaching. Okay, in the next video we'll look at phases of teaching. As of now, it was all about what teaching actually is. Stay tuned for more. Let me know if you want a video on any topic from B.Ed. I'll make notes and I will upload. Thanks for watching. Thanks for watching. Happy learning ahead. Bye bye. Let me give you a glimpse before I leave.